Namaste to everybody. Prayer. Sadashivasamarambham Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru Paramparam. Shruti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad-pada Shankaram Lokashankaram Aparikarna Sindhum Jnanadam Shantarupinam Sri Chandrasekhara Gurum Pranamami Mudam. Revision of this lesson. நிறைய பேருக்கு இந்த லெசன் புரியல, அதனால நான் இன்னைக்கு திரும்பி இந்த லெசனை ஆரம்பிச்சிடலாம். कुक्कुटः सप्तविषय पाठः लेसन नंबर 27 उच्चैः loudly तारम sound प्रातःस्तराम morning sound सर्वम all चित्रे अस्मिन् और अस्मिन् चित्रे चित्रे means picture, अस्मिन् means this. In this picture एकः one कुक्कुटः द्वे कुक्कुटयोः केचन शाबकाश्च सन्ते. Here, one cock and two hens and some young ones are here. Kukkutasya shirasi, on the cock's head, tambrachuda vartate. Red chuda is there. It is called chuda. Tasya varnascha chitro ramyascha. Chitro na many kind of the colors. Chitra. Tasya his color. Varna means color. Chitro, different types of, and ramyascha, and beautiful. Kukkutayah varnastu dhusaraha, but Kukkuti's varna is dhusar, grey color. Varna means color. Tasyaha, on her, shirasi, head, tamra chuda na vidyate.
on her head. Red chuda is not there. Te shavakaha sarvadeva. Sarvada plus eva. Sarvadeva matrasa paryatante. Paryatante means roaming. Te shabakaha, they young one. Sarvadeva, always. Matrasa, with their mother. Paryatante, roaming. They, young one, always roam with their mother. Kukutaha, pradhanyena, dhanya kanan bhakshayante. Bhakshayanti means eating. Kukutaha, pradhanyen kukutaha. Mostly hen eat dhanyam, the karam of dhanyam. Te padabhyam, they with their foot, avakaran, vikiranto, bhakshyam, anvishayante. They always in search of, anvishyanti, they search. Avakaran, vikiranto, the dhanya which are lying here there, by sweeping, they always touch the dhanyam, eatables. Chanchva, cha uddharante, and by their beak, uddharante, they open that, each and every grain. Kukutaha, pratyaham. Hence, pratyaham, daily, pratastaram prabudhyante. In the morning, they make us to get up, prabudhyante. So we all people all get up by the sound of the hen. Uchchai kroshantaha, loudly making sound. They pratyushe, in the morning. Sarvan, all. Praninaha, all human beings. Prabodayante, they make us to get up. They make us to awake in the morning. Utishta janaha, utishta, hey people, get up, get up. Alam nirdaya, don't sleep. Nidraya, sleep. Alam, don't sleep. Prabhata, rajnihi, chakshur, unmilayat. Chakshur means eyes, unmilayat means closed. Now, prabhata, now the prabhat, and the rajni, the ratri has closed its eyes. Kavatam udghatayas. Udghatayas, open. Kavatam, open the door. Suryadayat purvam, shayyam tyajat. And you leave your shayyam, your bed, before Suryodaya, before rising the sun. Iti vadanta,
having said this, saying this, taram ratante. They're saying this again and again. Kukutanam shabdam shrutva. Shrutva means having heard. Kukutanam shabdam, sound of the hen. Kechit janaha, some people. Shayanat, from the bed. Uttaya, getting up. Swiyeshu, own. Karmasu, work. Pravartante, they start. Having heard the sound of the cock, some people get up from the bed and they start their own work. Kukuta ratro yame yame. In the pahar, kalam, viruvanto, velam bodhayati. They making noise, velam, them addressing bodhayanti to that this is the first part of the night, this is the second part of the night, third part of the night. In this way, every and each part they make us to know. Prashnaha Itre asminke sante. Who are there in this picture? Kukutasya shirasi kim vartate. What is on the head of hen? Tasya varnaha kidrishaha. How is its color? Kukutaya varnaha kidrishaha. How is its color? Kukutaya. Tasyaha shirasi kana vidyate. What is not her head? Te shabakaha kada kaya se paryatante. And a young one, when and with whom they roaming. Kukutaha pradhanyena kani bhakshayante. The cock mostly what they eat. Te katham bhaksham anavishyanti kaya jo uddharante. How they search of the food and by which they open it. Kukutaha pratyaham kada prabhudyante. Whom they daily are to get up. Kim kurvantaha kan prabodhyante. What doing and whom they addressing, whom they asking to get up. Kim vadanta evtaram ratante. What saying, they saying it again and again. Tesham shabdam shrutva. That sound, hearing that sound, ke kim kurvante. Who are and what they doing. Kukutaha kim kurvantaha velam bodhayante. Kukuta, what they are doing and how they velam bodhayanti, how they addressing the velam, daytime. Tathapi prabriti prayena atrantare swayameva
एते यथा योग्यं वाक्यानि पूर्यत। तथापि, then also, prabhuti, after this, prayen, mostly, atrantare, after that, dash sarve vrikshaha vasantamase pushpayante. So sarve vrikshaha vasantamase pushpayante. Atra antare, in this between, द्वौ बालो कलहं कर्तुम् आरभेताम् डैश उपाध्यायः अगच्छत्। द्वौ बालो कलहं कर्तुम् आरभेताम् अत्रान्तरे उपाध्यायः अगच्छत्। The first is सर्वे वृक्षाः वसंत मासे पुष्पयन्ते। प्रायेण सर्वे वृक्षाः धेनवः केवलं तृणानि भक्ष्यन्ते डैश मधुरं क्षीरं यच्छन्ति च। धेनवः cows केवलं तृणानि भक्ष्यन्ति, they eat only the तृणं। मधुरं क्षीरं यच्छन्ति च, तथापि मधुरं क्षीरं यच्छन्ते, then also they give us the sweet milk। बाल्यात् dash अहं तव मित्रम अस्मे। From the childhood, balya prabhate, aham, I am your friend। अजाः dash प्रचाराय गच्छन्ते प्रत्यागच्छन्ति च। अजाः स्वयमेव प्रचाराय गच्छन्ते प्रत्यागच्छन्ति च। उधर उन्मील उत्तिष्ठ एतेषां लंग रूपाणि वदत। You say the dhatu rupani and write the lang lakar। उद्धर उन्मील लंग लकार। Kshatri pratyantat vad। What are the Kshatri pratyay? That you have to find out from this। Vadanta Kshatri pratyay। Sankhya shabdaha, Sankhya-vachak shabd, which I will explain how to do। Prathama, Dvitiya, Tritiya, Chaturtha। लेसन नंबर 28 पाठ मेषपालः। गोट मैन। वोकैबुलरी मेषपालः शेपर्ड। ऊर्ना bull, यूथम herd, प्रातिवेशिकः neighbor, कित्तवः रफ, संप्रते now, अन्ये दुहो next day, पूर्वे दुहो previous day,
Mrisha, falsehood. Mesha, sheep. Prishtataha, in behind. Pratyaraha, pasturing. Swechha, self-will. Chapalaha, fickle. Akroshat, cried out. Adhavat, ran up. Asaha, ahasat, laughed. Vedana, pain. Aste, stay. Na kevalam, not only, kintu, but also. Youtham, herd. Urna, bull. Prativeshikaha, neighbor. Kitva, raise up. Mrisha, false. Samprati, now. Anyedyu, other day. Purve the yuho, before this one day. Na kevalam, kintu, not only, but. Yaha pashya, see this. Meshanam, ajanam, cha youtham gacchate. Meshanam, ajanam. Meshanam, ajanam, cha, and youtham, group, gacchate, going. Mesh means sheep and goats. Herd is going. Mesh and sheep groups are going. Youthasya prishtato, gachan. Gachan means going. Youthasya prishtato. Prishtato means on the backside of the herd, on the group. Purusho Meshpalaha. That Purush is Meshpalaha. He is shepherd man. Saha, he, Meshan, sheep, Ajan, Ajancha, and goat. Pracharaya, Vanam Nayate. So he is taking this fish, sheep and goat for the pracharam, for roaming. Te tatra swechaya. Prachar means to churn, for eating grass and all. Te tatra, they there, swechaya, by their own, charantaha, grazing, udaram purayante. They fill the stomach. Sahameshan, he the shepherd,
Ajancha. He, that shepherd, Meshan, sheep and goat, for grazing Vanam Nayate, taking to them to forest. Te tatre, they are Svechaya, by their own, Charantaha, grazing, Udaram Purayante, with their stomach. Na kevalam trinanya eva, not only, na kevalam, only, trinanya eva, the dried stick, kintu, param, but, parnani api, but the leaves also, they, bhakshayante, eating. So they not only eating the dry grass, but the leaf also they are eating. Ayam Meshpalo, this shepherd man, Ajanam Shirena, by the milk of goat, Meshanam Urnaya, and the wool of sheep, Swakutumbam Bharate. See, he feels the livelihood of their family. Ajanam Shiram, the milk of the goat, Mahad Oshadam, is the great medicine, Maha medicine, Aushade. Meshanam Urnabihi, sheep's wool, Shaitya Rakshanai, for protection from the cold. Shaitya, cold. Rakshanai, for the protection. Kambalaha, Kambal, Kambali. Samana Harani, Sammana Harani, for them, to wearing for them, Ramyani Vastarani, beautiful cloth, Chakriyante, and they make. By the wool of the sheep, to protect from the cold, they make kambali, rug, samanaharani, to protect themselves, beautiful cloth made. Ato ajaha meshascha atyantam upayuktaha praninaha. Ata, therefore, ajaha, goat and the sheep are very, very useful prani. Meshpalo ayam swasya putram meshe savanam presyan ate. This is a small story. Meshpala, the shepherd, Swasyam is his own putram, son, Meshe saha, with the sheep, Presyan ate, he sent him to the forest with the sheep. The shepherd man sent his son to the forest with the sheep. Vanam gata, going to the vanam,
forest, sah chaplo, he naughty balakah, boy, ekasmin dine, one day, vinodatham, for the fun, vyagro vyagraha, iti uchai akrosat. He loudly, he cried, tiger, tiger. Tada prativeshika. Then neighbors, janaha, neighbors people, shastrani adaya, bringing their weapon, tasya samipam adhavan. They ran near to him. Tatra, there, vyagro na ase. Tigers were not there. Tane samagatana viksha. Samagatana viksha. Sah balo ahasa. To them, they all came there, this, seeing that boy laughed, ahasat, laughed. Kitva ayam asadyavadi balakaha. How rough this liar child. Iti vandanta, vadanta, te roshena pratyagachan. Having said this, Roshen, angrily, they returned back. Pratyagachan, they gone. Atha anyeduhu satyameva vyagra samayataha. Atha, after that, anyeduhu, other day, satyameva, real vyagra, tiger, samayataha, came. Tam drishtva, seeing him, vito balakaha, the frightened child, vyagro, vyagro, itya akrosha, he cried, tiger, tiger, I am purveduriv mrisha akroshat iti matva. I am this purveduriv, like before, mrisha, false, akroshat, crying, iti matva, having thinking, na kaschit tatra gataha, nobody has gone there. Vyagro balakasya karno nasikam cha abhachyat. The tiger ate child's karno, ears, nasikam cha, and nose. Abhachyat, ate. Taya vedanaya pidhyamanaha saha graha eva aste. That vedanaya, taya vedanaya, by this pain, vedana, pain, pidhyamanaha, pidhyamana was very much this paining. Saha graha eva aste. He came back to his house. Tasmadayam, from that day onwards, ayam nishpalaha, this shepherd man, swayameva, he owned, samprati, now, tan, to them, vanam nayate, taking to the forest. Anrittavadinaha,
सत्यम अपि वचनम जनाः असत्यम मन्यते. Unritvadina, liar, if they say satyam, they say the truth also. But the people, janaha, people, manyate, will say it is false. Tasma, that is what. Vinodartham api, for the vinodam, for the fun also. Asatyam na vaktavyam, don't tell the lie. Kintu, but sarvada, always. Satyameva vaktavyam, always tell the truth. Tatha cha uktam, that is why it is said. Satyam vad, say the truth. Dharmam cha, and follow the dharmam. So this is the Sankhya-vachi Shabda. How to say this one? The Sankhya-vachi Shabda எப்படி pronounce பண்ணணும், எப்படி சொல்லணும்னு இங்க உங்களோட பேஜ் நம்பர்ல குறிச்சு வச்சிருக்கு. பேஜ் நம்பர் சப்த மஞ்சரி 107. Sankhya-vachi Shabdah. Akaran pulling प्रथम शब्द. प्रथमा, प्रथमः, प्रथमौ, प्रथमाः. Rama Maribogum. And Sampradan, Prathama, Prathamo, Prathamaha. Rama, Ramo, Ramaha. Ramam, Ramo, Raman. Prathama, Prathamo, Prathamaha. Prathamam, Prathamo, Prathaman. Ramen, Ramajam, Ramahi. De Mari, Prathame, Prathamavyam, Prathmehe. De Mari Bogum. And the Prathama is Striling Shad will go like Rama. Prathama, Prathame, Prathamaha. Rama, Rame, Ramaha. Remember, Napusakling Prathamam, Prathamam, Prathame, Prathamane. Phalam, Phale, Phalane. Vanam, Vane, Vanane. De Mari Bogum. And Akaran pulling Ditya Shabda also. Prathama. Dityaha. Dityau. Dityaha. Dityam. Dityau. Dityan. Dityen. Dityabhyam. Dityahi. Dityaya. Dityabhyam. Dityebhyah. Dityat. Dityabhyam, Dityebhyah, Dityasya, Dityayoho, Dityanam, Ditye, Dityayoho, Dityesu, Ditye, Dityayo, Dityaha. Akaran Ditya Shabda, Rama Madri Pogum. Napusakling, Dityam, Ditye, Dityane. Dityam, Ditye, Dityane. இதே மாதிரி ஏகா शब्द. ஏகஹ, ஏகா, ஏகம். நிறைய இது மாதிரி கொடுத்துருக்கு. ஒருத்தர் நல்லா படிச்சுட்டாக்க நல்லபடியா வந்துடும். நம்ம ரீடிங் வச்சுக்கலாம். Let us start the reading lesson. Lesson reading. Lesson reading. யார் படிக்கிறீர்கள்மா? சொல்லுங்க சார். படிக்கிறீங்களா லெசன்? லெசன் நம்பர் 27 தானா? ஆமா. முதல்ல இருந்து படிக்கட்டுமா? படிங்க. குக்குரஹ உச்சைஹி
தாரம் பிராத்தஸ்தலம். அது ஒரு தூரம் படிச்சாச்சு இல்லையா? அன்னைக்கு முதல் படிச்சதோடு சரி. ஆமா, இது நெக்ஸ்ட் படிங்க. இன்னைக்கு அடிச்சது மேஷ்பாலஹ. மேஷ்பாலஹ யூதம் ஊர்ணா பிராतिवेशिकः कितवः मृषा संप्रति अन्ये दयुः पूर्वे दयुः न केवलं किन्तु इह पश्य मेषाणां जनानां च यूतं गच्छति यूतस्य मेषाणाम् अजानाम् अजा मेषाणाम् अजानां च यूतं गच्छति यूतस्य पृष्ठतो गच्छन् पुरुषो मेषपालः स मेषान् अजांश्च प्रचाराय वनं नयति ते तत्र स्वेच्छया चरन्तः उदरं पूरयन्ति न केवलं तृणानि एव किन्तु पर्णानि अपि ते भक्षयन्ति अय मेषपालो अजानां क्षीरेण मेषाणाम् ऊर्णया च स्वकुटुम्बं भरति अजानां क्षीरं महा औषधं मेषाणां पूर्णाभिः शैत्यरक्षणाय कम्बलाः सम्मानार्हिणि रम्याणि वस्त्राणि च क्रियन्ते अतो अजाः मेषाश्च जन्तु उपयुक्ताः प्राणिनः मेषपालो போரும் ரொம்ப நல்லா படிச்சிருக்கேன். சரி, நல்லா படிக்கிறேன். சரிம்மா, தேங்க்யூம்மா. இத்தனை நல்லா படிக்கிறதே இல்லை, ரொம்ப நல்லா படிக்கிறது. ஓகே, வேற யாருமா நெக்ஸ்ட்? ஓகேம்மா, படிக்கமா. லலிதா சந்தானம் ஃபர்ஸ்ட் லைன் படிக்கட்டுமா மேடம்? எது படிக்கணும்? செகண்ட் லெசன்மா. அல்ல, செகண்ட் லெசன் அடுத்த பேரா படிக்கட்டுமா இல்ல? படிங்க. அடுத்த பாட்டா படிக்கட்டுமா? படிங்க. மேஷபாலோ அயம் ஸ்வயஸ்ய புத்திரம் மேஷயி சஹவனம் பிராயாய प्रेष्यन् आसीत् वनं गतः स वपलो बालकः एकस्मिन् दिने विनोदार्थं व्याक्रो व्याक्रः इत्युच्चे आक्रोशत् तदा प्रातिवेशिका जनाः मैडम शस्त्राणि आदाय तस्य समीपं अधावन् तत्र व्याक्रो न अस्ति तान् समागतान् विश्य स बालो अहसत्
कितवो अयम् कितवो अयम् असत्यवादी बालकः असत्यवादी बालकः इति वदन्तस्ते रोषेण प्रत्यगच्छन्. வெரி குட். கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ஆனவங்க நல்லா படிக்கிறேன்மா. கொஞ்சம் கஷ்டமா இது மாதிரி படிச்சுட்டே இல்ல படிக்கிற நல்லா படிக்கிறேன். இது மாதிரி படிச்சுட்டே போனா நல்லா. இன்னும் கொஞ்சம் சண்டே கொஞ்சம் தெரியணும். இந்த சண்டே நல்லா படிச்சுட்டாக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்லா வரும். சண்டே தான் இன்னும் நல்லா படிக்கணும். பிரிச்சு எப்படி படிக்கணும்னு நல்லா கவனிக்கணும். சரிம்மா. வேற யாருமா? யாருமே இல்லையம்மா. நெக்ஸ்ட் ஒன். இத்தனை பேர் இருக்கல படிக்க மாட்டேங்கிறல. வித்யா விஜயமாலிங்கம் படிங்கம்மா. நீங்க படிங்கம்மா. ஓகே. अदा अन्येषु सत्यमेव व्याक्रः समायातः तम् इत्युक्त्वा भीतो बालकः व्याक्रो व्याक्रः इत्याक्रोशत्. अयं पूर्वे दूरिव मृषा आक्रोशत्. मृषा आक्रोशति इति मत्वा न कच्चित्. तत्र कदः व्याक्रो व्याक्रो बालकस्य कर्णौ नासिकां च अभक्षयत्. दया वेदनया पीडयमानः स ग्रह एवास्ते तस्मात्तयं मेषबालकः स्वयमेव सम्प्रति तान् वनं नयति. கொஞ்சம் அவசரமா போகணும். சரி சரி ஓகே. நெக்ஸ்ட் யாருமா? ஜயா படிங்கம்மா. சத்தியமபி ஜனாக படிக்கிறேன் மேடம். படிங்க. ஹலோ. நான் கேக்குறேன் படிங்க. अङ्कृत्वादिनः सत्यमपि वचन् जनाः सत्यं मन्यन्ते. तस्मात् विनोदार्थमपि असत्य न वक्तव्यं किन्तु सर्वथा सत्यमेव सत्यं. दया च उक्तं सत्यवत सत्यं वद चर सत्यं वद धर्मं चर सत्यं वद धर्मं चर इति. நல்லா குட். ரொம்ப நல்லா படிக்கிறேன்மா. வேற யாருக்கா? வேற யாரும் வரையலமா படிக்கிறதுக்கு? இத்தனை பேர் இருக்கலமா. இது கஷ்டமா இருக்கு போல இருக்கா. நிறைய பேர் வரல படிக்கிறதுக்கு. யாருமா படிக்கிறலமா?
ஓகே வித்யா வாங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா வித்யா படிக்கிறேன் மேடம். படி என்ன என்ன மேடம் படிக்க? பிகினிங்ல படுங்க. ஓகே மேடம். மேஷபாலக யூதம் ஊர்ணா பிராதிவேஷிகः கிதவக மிருஷா சம்பிரதி அந்யதேயு அந்யேதயு பூர்வேதயு ந கேவலம் கிந்து இக பஷ்ய மேஷாம் அஜானாம் ச மேஷானாம் அஜானாம் ச யூயம் கச்சதி. ஓகே யூதம் கச்சதி. யூதஸ்ய पृष्ठो कच्छन् यूतस्य पृष्ठतो कच्छन् पुरुषो मेषपालः सः मेषानं अजां च प्राचाराय वनं नयति. ते तत्र स्वेच्छया चरन्तः उदरं पूरयन्ति. न केवलं तृणान्येव किन्तु तृणान्येव किन्तु पर्यानपि ते पर्णान्यपि ते पक्ष्यन्ति. अयं मेषबालो अजानां क्षीरेण मेषान पूर्णया च मेषानाम् ऊर्णया ऊर्णबुल् मेषानाम् ऊर्णया च कुटुम्बं भर्ति. कुटुम्बं स्वकुटुम्बं भर्ति. कुटुम्बं स्वकुटुम्बं भर्ति. अजानां क्षीरं महदौषधं मेषानां ऊर्णाभिः शैत्यरक्षणाय कम्बलः सम्मानान् अहरानि. रम्यानि वस्त्राणि च क्रियन्ते. अदो अजाः मेषाश्वा अत्यन्तम् उपयुक्ताः प्राणिनः. मेषबालोऽयं பார்க்கலாம். யாரும் படிக்கவே மாட்டேங்கம்மா, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா? இந்த லெசன் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு போல இருக்கு. படிக்குமா? வெயிட் பண்ணுவா மேம். படிக்குமா? செகண்ட் பேரா ரீட் பண்றேன் மேம். சரி.
मेषबालो अहं मेषबालो अयं பாலோ இல்லம்மா மேஷு பாலோ मेषबालो ह्यहं பா சொல்லுங்க பா மேஷு பாலோ அயம் मेषबालो ह्यहं तस्य पुत्रं मेषैः सह वनं प्रेष्यन् वासीत् वनं गतः स चपलो बालकः एकस्मिन् तेन दिने विनोदार्थं यात्रोः व्याघ्रो व्याघ्रः उच्चैरात्रो आक्रोश तदा प्रातिवेशिका जनाः शस्त्राण्यादाय तस्य समीपं तदावन् तत्र यात्रो नाशित् तान् समागतान् विश्य सः बालो आहसत् इति वे अयम् कित्वायम् असत्यवादी बालकः इति वदन्त ते रोषेण प्रत्यगच्छन् மேம் இது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு இந்த லெசன். இல்ல நாளைக்கு நான் இன்னொரு தடவை படிக்கிறேன் இதை உங்களை ரிப்பீட் பண்ண வைக்கிறேன் எல்லாரும் இன்னொரு தடவை. சரி. சண்டி நல்லா பெரிய பெரிய வேர்ட்ஸா வந்துருச்சுங்க. நல்லா சண்டி பண்ணி உங்களை எல்லாரையும் நல்லா படிக்க வைக்கிறேன். நாளைக்கு ஒரு வாட்டி படிக்கலாமா? ஆமா. இந்த அளவு நான் படிக்கிறேன் இதே பெரிய விஷயமா? வேற யாராவது யாரு கேள்மா? வேற யாருமே இல்லையாமா? என்ன சித்ரா ரமேஷ் நீங்க எப்பவும் படிப்பில்லையம்மா? சுபாஷினி கிருஷ்ணன் சார் என்னாச்சு யாரும் மாட்டேன்றாரு இன்னைக்கு? கிழமை யாராவது? சரி நாளைக்கு இந்த லெசன் திரும்பி நான் ரிப்பீட் பண்றேன். நீங்க கூடயே ஃபாலோ பண்ணி படிச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் ரூல்ஸ் இருக்கு. சண்டே ரூல் உங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன். அந்த சண்டே எப்படி வரும் நீங்க ஒரு பார்த்துட்டாலே உங்களுக்கு நல்லா படிக்க வந்துடும். வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுமா? Anybody is having any doubt? Okay, last ஸ்லோகம் படிக்கலாம். ஸ்வஸ்தி பிரஜாப்யः பரிபாலயந்தாம் ந்யாயேன மார்கேன மஹி மஹிஷா